He's starting with the river boat problem. The river is flowing in this direction. Okay. Can I say this is the velocity of the river? इसको नाम देंगे VR bar. What is VR bar? Velocity of river. We call it as river velocity also. Hello. Yes, sir. The boat is being steered this way. A person is steering a boat this way. इसको बोलते हैं steering velocity or I can say rowing velocity. इसको नाम दिया जाता है VBR. VBR is also termed as which velocity, beta? Rowing velocity. Which is also called velocity of boat with respect to river. इसका मतलब you have not taken the speed of the river into consideration. You just started in the red line. But you know what is going to happen? Will the river velocity be added with your velocity of the boat? Yes, sir. Yes, sir. Can I say both the vectors will add up? And according to parallelogram, the net velocity will come along the diagonal. Yes, sir. Can I say this is the PB net velocity of the boat? So actually the boat is not going in the direction of VBR. उसको जाना तो ऐसे था, PBR के डायरेक्शन में, ऐसे जाना है, बट वो चला कैसे गया? ऐसे चला गया. बोलो. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can I say let the angle between VBR and VR be theta? Can I say उसको जाना थीटा एंगल पर था, बट वो थीटा एंगल पर नहीं जाके कोई दूसरे एंगल अल्फा पर जा रहा है. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. This is the concept of river boat problem. That जाना उसको और है किधर है, but due to the river speed, that river speed will be added with VBR and will give you the net velocity along that direction. Let W be the width of the river. What is W? Width of Width river. of river. Width of river. Are you all understanding what's happening? Yes, sir. अब है ना, इसको हम लोग थोड़ा resolve करके solve करते हैं. We'll solve this by another method where I'll resolve the whole thing and we'll solve it again. ये कौन है? VR है. Velocity of river. ये कौन है? VBR. कितना एंगल पर उसको जाना है? थीटा. Theta. सुनो बेटा, can I split VBR into two parts? ये डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा कंपोनेंट इसका? Maybe VR cos theta. Cos theta plus VR. And in this direction the velocity will become what? VVR sin theta. VR sin theta. This is W. Very good. So now forget about VBR. We have got the two components, which is VBR cos theta and VBR sin theta. I'm going to make a new diagram also on the next page. Pay attention, please.
So I'm going to go to the next page. In this direction, how many velocities did come? 2. 2. What were they? VBR cos theta plus VR. VBR cos theta plus VR. And this is going to become? VBR sin theta. VBR sin theta. Can I make a parallelogram? The resultant of both of them is going to give you VB net. And this VB net, remember, was at angle alpha. Can I say actually the boat is going to travel this way? Diametrically, directly opposite point, let it be A. This point where it is reaching is B. Can I say this much is the drift along the direction of the river of the boat? Hello, he was here, no? He was standing here. He has come here, opposite bank. So how much is the drift along the direction of the river? X. Yes, sir. How much is the width of the river? W. Did you get it, beta? Hello? Yes, sir. Yeah, understanding. Now I'll try to make the formulas. Please pay attention to me. Can anyone tell me what is the formula for time taken to reach the opposite bank? Time will be Distance upon speed. W upon distance upon speed in that direction. Distance upon Speed in that speed direction. in that direction. What is W के direction वाला speed? VBR sin VBR theta. VBR sin theta. We are sin theta. Very, very important formula. Pay attention. Okay. Can anyone tell me what is the formula for drift? Drift will be, drift is distance. Distance is speed into time. Yes, sir. What is the speed in that direction of X? VBR VBR cos cos theta VBR cos theta plus VR. Can I say distance will be speed into respective time? Yes. And where do you get the time in equation number 1? Distance will be speed in that direction into time. Jaise time was distance upon speed in that direction. Hello, did you understand? Yes, sir. Yes. These two formulas you have to learn by heart. LBH. Otherwise you can't do only. Time will be W upon VBR sin theta, and X is VR plus VBR cos theta into T. Correct, bhai? Yes, sir. Yes. Okay, now I'm going to do 2 cases, then I'll solve the sums which are based on this. Now, tell me the 2 formulas which were there. Time was W by VBR sin theta. and X was VBR cos theta plus VBR into time. this 2 have to be learned again and again. Now I'm starting with our concept of case 1, which is called as shortest time. What is time ka formula we know? W by W VBR upon sin theta. Can I say this has to be minimum? This denominator has to be Maximum. maximum. Inverse है. Maximum मतलब sin का value should be maximum.
You have learned in mathematics sin, cos, tan का maximum value कितना हो? Sin, cos का maximum value कितना होता है? 1. 1. 1. That means sin theta should be maximum. That means it should be 1. So theta should be how many degree? 90. 90 degree. Very important. That means what? How are you rowing the boat? How is your rowing velocity? Perpendicular to the river. Theta should be 90 na beta? Hello? Yes, Yes, sir. yes, sir, yes, sir. If this is VR, your VBR should be this way. The theta between them should be 90 na? Hello? Yes, sir. What is this generating your VB net? Is the drift there or not? Yes, drift is there, but this is minimum time. Minimum time doesn't mean minimum shift, huh? Hello? Yes, sir. No, bhai. Minimum time doesn't mean zero drift, huh? It doesn't mean that drift is zero. Drift will be there. Minimum time it is. We are talking only about time. People confuse that it should be drift also should be zero. No. Drift is there. Can I say x is not equal to zero? Time is minimum. दोनों को confuse मत करो. अच्छा, can you look at these two formulas and tell me what will be the formulas modified into now? Time का formula क्या हो जाएगा minimum time का? W by of- VBR. VBR. बोलो correct है. W by VBR. Hello. Yes, sir. Yes, sir. It has become 90, right? अच्छा, कोई बता सकता है x का formula क्या हो जाएगा? VR into T. VBR. Because ये VBR cos theta will become 0 ना? Cos 90 is 0. So it will become what? VR into T. But T should be what? T should be Minimum. what? T minimum. Minimum. W by. यहाँ से substitute कर रहे हैं ना आपको. Correct है ना? Hello. Yes, Yes, sir. sir. So you need not do all this case one. क्या करना है? Whenever they ask you that shortest time की बात करनी है. Shortest time की बात करनी है. आपको थीटा कितना पुट कर देना है ये फॉर्मूला? 90. 90. Nothing else. सब याद मत करो. थीटा को कितना पुट कर देना है ये फॉर्मूला में? 90. You remember these two formulas as I told you, learn by heart. Hello. Yes, sir. Okay, learn minimum. Your efficiency should be maximum. Okay, learning. How much you will learn, man? Okay, clear है? चलो. Now Yes, sir. we'll do case 2. Okay, we'll do case 2. Then we'll go to the sums. Okay, case 2. आपके हिसाब से case 2 क्या होगा? You know, Zero drift. Zero drift. zero drift. People have seen the videos. Very good, beta. Zero drift. What should be zero? X. 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 X should be zero. Okay. Pay attention over here. Now, the river. Flowing. इधर हाँ ध्यान देना please. Pay attention. You are standing at A. You want to go dam opposite B. बराबर है? River is flowing this way. Can I say which direction you should row? Will you row in the downstream direction or you will row in the upstream direction? Upstream direction. Upstream direction. Obviously, you will row somewhere here, na beta? Hello? Yes, Yes, sir. sir. VBR. Can I call this angle as theta? Yes, sir. Now, rather than making parallelogram, I am making triangle. Can I say VBR ऐसे जा रहा है? Okay, the river has pushed in this way. This is VR. Can I say in triangle, who gives you the third side? The third side will be there in which Resultant. direction? Opposite direction, yes or no? Can I say this will be your VB net?
अरे बेटा, are you understanding or not? Yes, sir. You went with VBR at an angle of theta in the upstream direction. River pushed you with VR, and so your net came along which direction, beta? VB net direction. Hello, bolo. Yes or no? Yes, sir. Acha, over here you can see who is the hypotenuse in the triangle. VBR. VBR. मतलब सबसे बड़ा side कौन सा है? VBR. We are. Always remember, for zero drift, VBR should be greater than VR. ये कंडीशन है कि रोइंग वेलोसिटी आपका ज्यादा होना चाहिए रिवर वेलोसिटी से. अगर रिवर वेलोसिटी ज्यादा हो गया तो यू विल नॉट रीच एबी ना, वो आपको ज्यादा धक्का मारेगा ना. हेलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज वीआर विल बिकम द हाइपोटेन्यूज ना नाउ. हेलो. Yes, sir. तो ये कंडीशन आप लोग याद रखो. कि फॉर जीरो ड्रिफ्ट हु शुड बी द हाइपोटेन्यूज? VBR. VBR. चलो अभी फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है. कैन आई से ये डिस्टेंस क्या है? W है. व्हाट इज टाइम का फॉर्मूला? W अपॉन स्पीड इन. VBR. VBR sin theta. हाँ, VBR sin थीटा. sin थीटा. VB net. VB नेट. अरे भाई, वो डायरेक्शन में स्पीड कौन सा है? W के डायरेक्शन में VB net. VB नेट है. या तो आप कह सकते हो VBR cos थीटा, वो भी कह सकते हो. करेक्ट है ना? अगर VBR को आप दो पार्ट में तोड़ेंगे तो इट विल बिकम VBR cos थीटा एंड VBR sin थीटा. यस और नो? ठीक है, ठीक है. Yes, चलो sir. इतना ये याद रखो. Can I write this formula like this also? Time will be W upon VB net. VB net को क्या मैं लिख सकता हूँ? अंडर रूट VBR square minus VR square. So what are you doing all these things? Did you understand what did I do? Yes, sir. Yes, sir. अरे I just applied Pythagoras theorem, man. VB net will be VBR square minus VR square. Yes or no? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. In that triangle, can you see this triangle? Suppose इसको नाम देते AXY. AXY triangle में sin theta निकालो. sin theta क्या रहेगा? VR by VBR. VR by VB net. VR by VBR. VBR. Okay, learn by heart formulas. Getting it? Okay. For zero drift, always row in which direction? Upstream. Upstream direction. By how much angle? Theta. Theta. What is Yeah. theta? Sine inverse of VR by VR by VBR. VBR. This is the punchline. Okay. I hope you all have understood everything. यार समझ में आ रहा है? Hello? Yes or no? Yes, sir. So these were all cases all about river boat problem, which is a very crucial problem in our NEET or the JEE. ठीक है? चलो start करेंगे. We come to page number 120. Books है आपके पास? I all having Yes, the sir. books. Yes, sir. Yes, sir. Because some questions now my typist has not made the PPT. I think first 5 questions he has not made the PPT. He's considered the 6th question as the first question. ठीक है? तो हम लोग है ना 5 questions यहाँ पर पढ़ के solve करेंगे. ठीक है ना? Hello? Yes, sir. Because he has not made the PPT. So यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं. Question number 1. Checkpoint 3.7. पेज नंबर क्या है? मेरी बुक में इट इज 120. 120 है. ओके, चलो शुरू करेंगे. स्टार्टिंग में क्या कह रहे हैं? A train is moving east and a car is moving north. So यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऐसे बना लेंगे. This is north south. What is this? Come on, please. Correct है? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. ट्रेन कैसे जा रहा है? East. East. This is the velocity of the train.
I don't know. ठीक है. And how is the car going? North. Okay. The observed direction of the car to the passenger in the train. Beta, who is looking at who? Who is looking at who? Train is looking at car. Yeah, the observed direction of the car to the passenger in the train. So it is the velocity of the, क्या चाहिए हमको? Velocity of the car चाहिए with respect With to what? respect to train. Train. Hello. Can I say as he told me that the train passenger is looking at, बोलो, Car. कार ना बाबा. अच्छा, इसका ट्रिक क्या है? ओके. Make it opposite. या जो देखने वाला है उसकी स्पीड को उल्टा करो. ओके, whoever is looking, make his speed opposite and give it to the other one. क्या ट्रिक है बेटा? जो भी देख रहा है उसकी स्पीड को उल्टा करो और सेकंड वाले को दे दो. कौन देख रहा है यहाँ पे? Who is Train. looking? Train is looking. तो ट्रेन की स्पीड को I'll make it उल्टा and give it to the car. Hello. Yes, sir. Whoever is the observer, make his speed opposite and give it to the other and make parallelogram. तो can I say ये तो कार है, ये तो ऐसे ही चलेगा. ट्रेन का स्पीड मैंने उल्टा कर दिया और इसको दे दिया. करेक्ट है? हेलो. Yes, sir. Can I make a parallelogram? ये क्या मिला? ये मिलेगा आपका नेट. नेट मतलब आपको क्या चाहिए था? वेलोसिटी ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. वेलोसिटी ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन. इन विच डायरेक्शन इट इज? Northwest. ये डायरेक्शन है ना बेटा. ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट. हेलो. यस और नो? Yes, आंसर sir. है. Yes, sir. बोलो. Yes. व्हाट इज द पंच लाइन? whoever is looking, उसका स्पीड उल्टा करो, पहले वाले को दे दो. ओके, ठीक है. Yes, sir. Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. So, यस बेटा. so can we do this vector or vector? You can do this I cap J cap में भी कर सकते हो, but this is the easiest method. You can do this vectorially also. I cap J cap method में भी कर सकते हो आप. Getting it what's happening? But that method will be a long method. Getting it? एक मेथड करो और उसको पक्का करो, rather than solving 10 methods and हमको फास्ट करना है ना. We are solving competitive exam बेटा. Question number 2. A 10-meter long train crosses a man traveling at 5 km/h in the opposite direction. अब यहाँ पर देखो एक ट्रेन है. कितना मीटर लॉन्ग ट्रेन है? 100. 100 meter. And there's a man who's going this way. कितने स्पीड से जा रहा है? 5 Kilometer kilometer per per hour. Let the train का speed be v. I don't know. Hello. Yes, sir. Yes or no? He crosses the man in 7.2 seconds. So how much is the time taken to cross? 7.2 seconds. कह रहे वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितना है, मतलब क्या निकालना है हमको? v निकालना है. ओके. अब यहां पर कितना डिस्टेंस उसको क्लियर करना है? खुद का डिस्टेंस. हाउ मच इज 100. उसका खुद का डिस्टेंस? बिकॉज मैन इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट ना. हेलो, दिस इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट? अ पॉइंट. Point. तो एक पॉइंट को
train को clear करना है, which is 100 meter. Are you all understanding? Yes, sir. Yes, sir. Yes, How sir. much is the relative distance between them? 100. 100. Can I say the distance relative between them? 100 meter. Bolo. Yes, sir. Can anyone tell me what is the relative speed in the direction? Relative speed. I had told you one trick that if they are there in opposite direction, add, and if they are there in same direction, subtract. बराबर है? Yes, sir. या तो Yes, ऐसे भी sir. कर सकते, या तो हम ऐसे भी कर सकते. We'll consider this to be what? Add. क्या? Rest. इसको Rest. दिमाग में रोक दो. इसका स्पीड उल्टा करके इसको दे दो. उल्टा करके इसको दे दिया मतलब ये 5 इधर आ गया ना बेटा. हेलो. Yes, sir. Did you understand my previous method? या तो आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं. When they are there in opposite direction, add both the speeds. So what will be the relative speed now? V plus V plus 5. Five. plus 5. V plus 5, and this will be in kilometer per hour. हाँ बेटा. Hello. Yes or no? Yes or no? Yes, Yes, sir. और टाइम पूछा है. बराबर है क्या? नहीं, टाइम दिया हुआ है. सॉरी, टाइम Velocity. कितना है? V. 7.2 seconds भी दिया हुआ है. So these three information is given. बराबर है. अच्छा, which formula to use? Speed is distance upon time. Yes. Hello. Speed is distance upon time. This is all a relative thing. I hope you all have understood. क्या कोई बड़ी बात है नहीं. Speed कितना है? V plus 5, but kilometer per hour में can I multiply by 5 by 18? अरे बोलो. Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. Yes. Relative distance कितना है? 100 है, and time is 7.2. हाँ भाई. हेलो. Yes, This will sir. be Yes, V sir. plus 5 is equal to 18 into 100. 15 into 7.2. क्या सही कर रहा हूं मैं? Yes, sir. कितना आएगा ये? 50. ये 50 हो गया. ओके. यहाँ से V का वैल्यू कितना है आपको? 45. What? Meter per second. Because already I have converted into 5 by 18. हाँ बेटा. हेलो. Yes, sir. यार 5 by 18 कन्वर्ट कर लिया ना, तो किलोमीटर पर आवर से सीधा किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में. सो व्हाट इज द आंसर? गॉट इट? बोलो. Yes, sir. ये कैंसिल कैसे करेंगे पता है ना? 9 2 18, 9 8 72. हेलो. थोड़ा मैथमेटिक्स भी आना चाहिए ना आप लोग को. तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. शुड आई गो? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है. Two bodies are separated by 9.8 meters vertically, one above the other. So initially they were body 1 and body 2. They were how many meters apart? 9.8. With respect to one another. They are released simultaneously. मतलब टाइम 0 पर इसको भी लीव किया हमने, दोनों को लीव कर दिया हमने. टाइम 0 पर दोनों को छोड़ दिया. ये ग्राउंड है. बराबर है? हेलो. Yes, sir. इस बॉडी को ऑल्सो यू लीव एंड इस बॉडी को ऑल्सो यू लीव. इनिशियल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में एट टाइम 0? 9.8 meter. Meters. Very good. Can I say after 2 seconds the distance between them will be what? अच्छा, मुझे एक बात बताइए. दोनों का इनिशियल स्पीड कितना था? They are dropped ना बेटा. दोनों का इनिशियल 0. स्पीड कितना है? 0. 0. मतलब u1 भी 0 है और u2 भी 0 है. तो रिलेटिव इनिशियल स्पीड कितना रहेगा दोनों के बीच में? 0 ही रहेगा. 0. हेलो. यस और नो? Yes, sir. अच्छा, दोनों के ऊपर क्या एक्ट कर रहा है जो उसको नीचे लेकर जा रहा है? Gravity. 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 Is acceleration due to gravity is g, and this also acceleration due to gravity is g. Can I say what will be the relative acceleration of one with respect to a1 minus a2? Will become 0. g minus g. 0.
yes or no बेटा? हेलो, Yes, sir. दोनों का relative acceleration भी zero है. That means relative acceleration zero होने का मतलब they are Same in separation. uniform motion with respect to one another. Hello? Yes, sir. Yes, sir. That means they are going with constant speed with respect to one another. Yes, sir. With respect to one another, huh? Not with respect to the person on the ground. With respect to the person on the ground, both are accelerating. But with respect to one another, मतलब A मुड़कर अगर 2 को देखे, suppose A पर you are there over here and you are looking at 2. तो आपके हिसाब से 2 कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है. बिकॉज आपके पास जितना एक्सेलरेशन है उसके पास भी उतना ही एक्सेलरेशन है ना. हेलो. Yes, sir. So they are in uniform motion. Uniform motion means equal distances in equal intervals of Time. time. That means अगर time 0 के बीच में their separation between them is 9.8 meters. So 2 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद the distance between them is always going to remain what? 9.8 9.8 meters. meters. Okay. Getting it? So what is the answer? C. Because they are in, whenever they are in relative motion with respect to each other, they are actually viewing uniform motion with respect to one another. Getting it? Hello. Yes, sir. Yes, sir. These are all very important conceptual problems. Okay. That's why I've selected this year DC Pandey, because very nice conceptual problems are there inside. चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे. A particle moves due north at 3 km/h and another particle is due west at 4 km/h. एकदम इजी है. देखो पार्टिकल ए कैसे जा रहा है? Due north. कैसे? कितना स्पीड? 3 km/h. वेरी गुड. ये नॉर्थ है बेटा. पता है ना, ये नॉर्थ साउथ ये बना लेने का. ईस्ट एंड वेस्ट. He is going there due north and second particle is going where? Due west. 4 km/h. Very good. अच्छा क्या निकालना है? Relative velocity of A with respect to B. Who is looking at who? B is B is looking at looking it. at क्या ट्रिक है? ट्रिक क्या है? B को उल्टा करो, A को दे दो. Yes or no? yes, sir. A तो वैसे का वैसे ही रहेगा. B को उल्टा किया मैंने और उसको दे दिया. Can I say resultant इधर आएगा और ये रिजल्टेंट का नाम क्या रहेगा? VAB. बोलो. हेलो. Yes, sir. Yes, How much is the magnitude of this 3? How much is the magnitude of this 4? So how much is the magnitude of the resultant? 5. 5. Because the angle between them is 90, na? So hello, yes or no? Yes, sir. Can I if you look at this triangle, ये triangle दिख रहा है आपको? Which triangle is this? This is a 3 4 5 3, triangle. 4, 5. And I told you opposite to 3 कितना डिग्री होता है? 37. 37. 37. ये एंगल तो 37 डिग्री होगा. You know this thing, हाँ? पहले तो आप मुझे बताइए what will be the answer now? Resultant A. 5 km/h. A. 5 km/h, 37 degrees. North of North of east. east. North of east. East से 37 degrees towards north. North of east ना, मतलब east से 37 degrees north की तरफ आपको जाना है. हेलो. yes, sir. 5 km/h, 37 degrees आपको जाना है. नॉर्थ जाना है फ्रॉम ईस्ट, तो उसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट. बराबर है क्या? व्हाट इज द आंसर? A. A. Getting it? Hello. Yes, sir. Yes. Yes, we Yes, have sir. done it in our theoretical lectures also. I hope it is getting smooth. हाँ, जैसे हम लोग और आगे सम्स करेंगे वैसे और स्मूथ हो जाएगा.
Next couple of questions we'll also do. I don't think so it'll get over, but ठीक है जितना हो सकता है, so that we can continue next time. Which question am I talking about? Fifth one. Pay attention, a very nice question. Fifth question. ध्यान देना है. A man is standing. अभी इसके 2-3 methods हैं. A man is standing on a road and holds his umbrella 30 degree with respect to vertical to keep the rain away. So how is the rain falling? 30 degrees with respect to vertical. तो अगर ये vertical है तो रेन ऐसे गिर रहा है ना बेटा. हेलो. Yes, sir. This is what V rain. बराबर. Yes. हेलो. थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा. This is V rain. And the man is stationary. Man is stationary मतलब this is actual velocity of the rain. हेलो. Because जब man चलेगा तो apparent velocity मिलेगी ना with respect to मिलेगा ना हमको relative motion मिलेगा ना. But this is man is standing, so this is actual velocity of the rain is ऐसे है. अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? Come on, fast. He throws the umbrella. हाँ, उसने umbrella फेंक दिया and starts running with 10 km/h. So can I say how is the velocity of the man? 10 बोलो, kilometer बोलो. per hour. He starts running this way. Velocity of the man is 10 km/h. Okay? Hello? Yes, sir. अच्छा क्या हो रहा है फिर? He finds that the raindrops are hitting him. How? Vertically. Raindrops कैसे हो गए उसके हिसाब से? Vertically on his. What is this? This is the velocity of the rain With respect to respect to whom? man. Man who is running. बराबर है क्या? Yes. अच्छा एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ. Why, sir, why did you take man running towards the left? Why didn't you take man running towards right? हेलो, आपको आपने सोचा रहेगा ना शायद ये. Yes, मैन sir. को ये डायरेक्शन में आपने क्यों लिया सर? ऑलवेज रिमेंबर जिस डायरेक्शन में मैन जाएगा ना उसके उल्टे डायरेक्शन में रेन जाएगा. तो अगर हमको रेन को कैसे बनाना है? वर्टिकल बनाना है. अरे भाई अगर मैन इधर जा रहा है तो रेन शुड गो दिस वे. गेटिंग इट? ऑलवेज रिमेंबर जिस डायरेक्शन में मैन जाएगा उसके उल्टे डायरेक्शन में रेन मुड़ेगा. गॉट इट? तो रेन को हमको कैसे बनाना था? वर्टिकल बनाना था. तो मैन को कैसे जाना चाहिए था? लेफ्ट की तरफ ही जाना चाहिए था. यस और नो? हेलो. Yes, sir. अगर मैन राइट की तरफ जाता तो रेन किस तरफ जाता? रेन वुड बी एंटी क्लॉकवाइज ना बेटा. Left. Yes, sir. हाँ, रेन वुड बी क्लॉकवाइज ना बेटा. लेफ्ट की तरफ जाता. यस और नो? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ये ट्रिक है. हाँ, ये याद रखना दैट जिस डायरेक्शन में मैन जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका रिलेटिव मोशन होगा. हेलो. डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? गॉट इट? शुड आई प्रोसीड? Yes, Yes, sir. sir. हाँ ठीक है. अभी अभी हमको क्या करना है? अच्छा यहाँ पर इसके बहुत सारे मेथड्स हैं which I have done one method. Always remember one formula. Velocity of the rain is velocity of the rain with respect to man plus velocity of man. ये दिख रहा है ये रेन. चलेगा ये कहाँ से आया सर? अरे यहाँ से तो आया. velocity of the rain with respect to man is v rain minus v man ना बेटा. हेलो. Yes, sir. So if I need only velocity of the rain, यहाँ पर कैसे लिखना है velocity? देखो कैसे लिखना है. velocity of A will be velocity of A with respect to B plus velocity of B. B की जगह B, A की जगह A. चलेगा ये? हेलो. Yes, sir. Okay, I'm rubbing everything and again I'll do so that you all can get the clearance. Question number 5. Okay. How's the rain falling? बोलो. 30 degree from the. 30 degree. This is V rain.
Man starts running this way. कितने स्पीड से? 10 kilometer per hour. So how will the rain go? Vertically on his Opposite direction. Rain को हमको vertical बनाना है. This is the velocity of the rain with respect to whom? Man. 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 Very good. So you all have understood. Okay? ठीक है, ये तो मिल गया हमको. अब हमने कौन सा फॉर्मूला आपको दिया था? Velocity of, बोलो, rain will be Velocity of rain with respect to plus velocity of man. getting enough. These are all shortcuts, हाँ. आप चाहिए तो नॉर्मल मेथड से पीछे भी देख सकते हो. डीसी पांडे में पीछे सॉल्व किया उसने नॉर्मल मेथड से. आई एम गिविंग यू शॉर्टकट. अच्छा, कोई बता सकता है इन इसमें रिजल्टेंट कौन है? इस फॉर्मूला में हु इज द रिजल्टेंट? Velocity of rain. velocity of rain. दिस इज द एडिशन ना. एडिशन विल बी द रिजल्टेंट ना बेटा. दिस इज द रिजल्टेंट. Yes, sir. हेलो. Yes, Yes, sir. sir. What are these two? They are components. थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा बट प्रैक्टिस हो जाएगा तो आ जाएगा. Can I make a parallelogram? Can I make a? Yes sir. Can I make what? A. Parallelogram. Who should be the resultant? V rain. V rain. V rain. मतलब can I say एक component V man है? दूसरा वाला component कौन है? V rain with respect to man. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या कह रहा है? ये रिजल्टेंट ऐसे आना चाहिए. एंड ये रिजल्टेंट का नाम क्या रहेगा? कम ऑन फास्ट. V rain. V rain. अच्छा, वी रेन कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ? 30 degrees. देखो रेडीमेड सेट हो गया पूरा. हेलो, गेटिंग इट? अच्छा, वी मैन का वैल्यू कितना है? 10. 10 kilometer per hour. अच्छा, क्या फाइंड करना है हमको? व्हाट आर दे आस्किंग यू? V rain. दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन ना. हेलो, Yes, sir. actual velocity of the rain I require. Very good, very good, very good. अच्छा, कौन सा वाला triangle I'll select? Can I take this 60 है, ये 30 है बेटा. ये कितना डिग्री रहेगा? 60. ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. क्या निकालूंगा मैं? cos 60. Cos 60. What is cos 60? V Root 3 man by 2. half. by V rain. बोलो. हेलो, Yes, sir. what is cos 60 का वैल्यू? Half. What is V man का वैल्यू? 10. 10. V rain का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20. किलोमीटर पर. Did you understand how to do? Hello. Yes, sir. ये बहुत इजी है एक्चुअली मानने जाओ. rather than solving that vectorially and all that nonsense, आप ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो you will get the resultant answer. हेलो, Yes, sir. ठीक है. Should I? We have other sums printed. So I'll go to the sums. ठीक है बेटा, दिख रहा है green slide? Can you see? Can you Yes, see the sir. green slide? Yes, sir. Yes or no? Okay. So I'll give you some homework also, 2-3 sums. Huh? Same. You should also try na something. A stationary man. Okay, ये वही टाइप का सम है बट हम लोग ट्राई करेंगे so that you all can get the hang of it. Stationary man. Observe the rain falling vertically downward. So man अभी stationary. How is the rain falling? Vertically downwards. Can I say this is the velocity of the rain? Actual velocity of the rain? Yes, sir. When he starts running 12 kilometers per hour, he observed that the rain is falling 60 degree with respect to vertical. अब मेरी बात सुनना सब लोग. Suppose man ऐसे भाग रहा है. कितने स्पीड से भाग रहा है?
12 kilometer. 12 kilometers per hour. तो उसको क्या लगेगा? रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. किस तरफ मोड़ूंगा मैं 60 डिग्री? क्लॉक के एंटी क्लॉक? Clockwise. Clock. हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड द ट्रिक? Yes. हेलो, मैन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके उल्टे डायरेक्शन में रेन मुड़ जाएगा. ओके, तो 60 डिग्री ऐसे मुड़ जाएगा. बराबर है? Yes. You understand the trick? Okay. Now, which formula will I apply? Come on. V rain. क्या रहेगा? V rain with respect to man By plus V V man. man. Plus Very V man. good. Plus V man. Very good बेटा. अच्छा, इन दोनों में रिजल्टेंट कौन है? V rain. V rain. ये कौन है? ये दोनों कौन है? Component. Component. कंपोनेंट्स. तो हमको पैरेललोग्राम ऐसे सेट करना है ताकि रिजल्टेंट वी रेन आ जाए. वी रेन कैसे है? वर्टिकल है ना? हेलो, Yes, sir. तो हम लोग ये दोनों कंपोनेंट्स पहले बनाएंगे. दिस इज आई विल मेक वी मैन एंड दिस आई विल मेक वी रेन एंड क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज है ये कैसे आ जाए? सॉरी, थोड़ा गलत हो गया. कैसे आ जाए वी रेन? वर्टिकल आ जाए ना बेटा? हेलो, Yes, sir. so I'll set it in such a manner that V rain should come vertical. तो ये वर्टिकल पहले बना लेते हैं हम लोग. ये V rain और ये ऐसे, ये ऐसे. Did you understand? Hello, Yes. this is V what? This is V man. कितना वैल्यू है इसका? 12. This is V rain resultant. कितना एंगल है ये? 60. Hello, and this is velocity of rain with respect to man. I'm very sorry. Hello, Yes. hello, बोलो. Yes, sir. चलो, अब क्या मांगता है इधर? What do you require? What do you V require? rain. V rain. You require V rain. You require V rain. अब मेरी बात सुनो. Pay attention over here. ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये V rain. ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? Can you see this triangle? कितना Yes, डिग्री sir. है? 60. 60. ये कौन है? V rain. ये वैल्यू कितना है? 12. 12. ऊपर वाला ना, सेम पैरेललोग्राम है ना? Yes, sir. So what I'll calculate? Tan 60, tan theta ना? Hello. Yes. Yes, sir. It will become 12 by V rain. Tan 60 कितना होता है? Root 3. Would be V rain equal to 4 root 3? Hello. Yes, sir. You should know this method, huh? Please, again. समझ आया आपको? अपने आप सेट हो जाएगा पैरेललोग्राम. Got it, बेटा? Got it? Yes, sir. Okay. Question number 7. You all will do it for homework. Please do it. Huh? It is a very nice question. Very nice question it is. I want you all to think. Otherwise, I would have done. Please think about this question. It's a very nice question. We'll go to the 8th question. Now we come to riverboat things. Huh? Hello. We are coming to riverboat problems. अच्छा, क्या कह रहा है? चलो आ जाओ fast. The speed of the boat. What is speed of the boat? मतलब VBR, rowing velocity in still water. Crosses the river of width कितना किलोमीटर है? 1. In the 1 shortest possible path. What do you mean by shortest possible path? It's zero drift. Zero drift. मतलब एक जीरो है. And कितना टाइम लगा उसको? 15 minutes.
15 मिनट बराबर है, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द रिवर निकालना है। वेरी गुड। कैन एनीवन टेल मी जब जीरो ड्रिफ्ट हुआ करता था तो टाइम का फॉर्मूला क्या था? टाइम वाज रिमेंबर W upon VB net, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. that is W upon under root VBR VBR square R minus square plus. minus VR square. minus VR square. Hello, I Yes, told sir. you to learn. See, I can't do anything if you don't know. तो ये सब चीज जिधर आपको याद करना है वो तो याद करना ही है। ओके चलो इधर आ जाओ फास्ट, कम ऑन लिसन टू मी नाउ। व्हाट इज टाइम का वैल्यू? 15 15 minutes. minutes. 15 मिनट नहीं चलेगा। 15 by 60 hour. 15 by 60, can I say it is 1/4 of an hour? हेलो Yes. अरे भाई दिस इज 15 by 60 ना, दैट इज 1/4 of an hour ना बेटा। तो बोलो ना भाई yes or no? What is time equal to 1/4? W कितना है? 1 किलोमीटर। ओके नाउ और क्या कह रहे हैं? VBR कितना है? बोलो। हेलो, Pi square. कैन आई स्क्वायर बोथ साइड्स? कैन आई इक्वेट द डिनोमिनेटर? Yes, sir. 16 is equal to 25 minus VR square. 25 minus 16 9 होता है VR square. What is VR equal to? 3. 3. Hello, did you get it beta? Hello, did you understand? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सी difficult है but you will enjoy. If you know the stuff you will enjoy. चलो ठीक है, should I go to the this was which question number 8 huh? I'm going to question number 9. अब ध्यान देना सब लोग, इधर मेरी बात सुनो। A ship X is moving due north. This is a ship X, velocity of X from this direction with a speed V. With the speed कितना है? V. And another ship Y is moving due west with the same speed. Where is it moving? Come on fast. West. अरे ये तो कर चुके हैं ना हम लोग, अभी तो किया था। क्या मांगता है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है क्या? Observes that. Okay. Sorry. There's a ship X. सुनो हाँ मेरी बात। There's a ship X. इधर जा रहा है। Observes. What do you mean by the word observes? We. It is relative. Yeah, With respect to X, Y is going west. Hello? This is the velocity of Y with respect to X. is V. बोलो। Hello. Yes, sir. Yes, sir. Actual velocity of Y चाहिए, मतलब हमको क्या चाहिए? VY चाहिए। क्या समझा आपको? ये समझा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, very good. चलो, can I write this as Vy will become Vyx plus Vx? Sir, what happened? Sir, अभी तो सिखाया भाई बा, बोलो। Yes, sir. Who should be the resultant? Vy. Vy. Vxy और इन दोनों को ऐसे सेट करना है ताकि रिजल्टेंट हमको Vy मिल जाए। हेलो, Yes, sir. ये Vx है, ये कंपोनेंट है, ये दूसरा वाला कौन है? Vyx है, और दोनों का वैल्यू कितना है? V है। तो इन दोनों को ऐसे सेट करना है ताकि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ जाए? रिजल्टेंट में क्या मिल जाए हमको? कम ऑन। Vy. अच्छा, हमको मालूम है दिस इज V and this is also V and angle between them is how many degree? 90. And I told you अगर दोनों वैल्यू V होते हैं and the angle between them is 90, याद है ना? 45. अगर ये F होता है, ये F होता है, 40. तो and the angle between them is 90, it will become root 2F. Do you remember? Root 2F. man? Yes, sir. Yes. So this velocity will become what? Root 2V. Yes, sir.
In which Yes, direction is this? Northwest. Northwest. मिल गया. तो आंसर क्या रहेगा? रूट 2v नॉर्थ वेस्ट. हेलो हेलो बोलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. One second. Are you all feeling comfortable? Now see, it is physics is tough only, but okay. Getting it? What's happening? Hello. Yes, sir. चलो बाबा आगे बढ़ेंगे. We'll go to the 10th question. Question number 10. Then I'll do 2-3 sums more and we'll wind up. 10th question. This is a river is flowing west to east with the speed of, what is the river velocity beta? 8 meters per minute. Per minute. A man at the south bank. ठीक है, यहाँ पर बना लेता है. रिवर कैसे जा रहा है? कैसे जा रहा है रिवर? West to east. वेस्ट टू ईस्ट. West to east. ऐसे. This way. This is the river speed. A man at the south of the bank. This is the south, ना बेटा? पता है ना आपको? तो ये north है. East है. West है. These all time pass you can do later. Okay. Capable of swimming 20 meters per minute in still water. Wants to swim across the river. Across the river मतलब क्या? In the shortest time. Oh ho. Shortest time. मिल गया. Catch मिल गया. How much should be theta? 90. 90. Formulas हमको सब पता ही है. Okay. So can I say he should swim this way? Yes or no? Yes, sir. What is the answer? No need to do anything. What is the answer? A. Due north. A. Due north. Finished. Hello. Yes, Yes sir. or no? Yes or no? अच्छा इसी की जगह वो बोलता शॉर्टेस्ट पाथ. तो कैसे कहता है? तो X हमको will be थीटा निकाल तो zero. हमको थीटा निकालना पड़ता है ना बेटा. Yes, sir. Yes. हेलो. Remember theta sin theta was VR by VBR. अरे man. Yes, sir. This is for x is equal to 0. तो ये निकालना पड़ता. ये जब आएगा तभी हम लोग देखेंगे. बट did you understand what am I trying to tell you? Yes, sir. यहाँ पर तो सीधा सीधा आंसर इट इज ड्यू नॉर्थ ओनली. वेरी गुड इफ इट कम्स इन द नीट. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. गुड क्वालिटी क्वेश्चंस man. Rowing speed of the man relative to water is 5 किलोमीटर पर आवर. ये क्या है? ये VBR है. And speed of the water कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर. बराबर. At what angle to the river flow should he head so that it wants to reach the point on the other bank? ये क्या है? क्या है ये? क्या है? What is it? X is equal Zero to 0. जीरो ड्रिफ्ट. जीरो ड्रिफ्ट के लिए अभी मैंने फॉर्मूला दिया था. साइन थीटा कितना होना चाहिए? VR by VBR. हेलो मैन, डिड यू अंडरस्टैंड? VR by VBR. व्हाट इज VR? Theta is equal to sine inverse of. एक मिनट. 3/5. हेलो. Yes, sir. 3/5. अच्छा यहाँ पे 3 4 5 ट्राइंगल याद है सबको? सबको याद है? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ये कितना डिग्री होगा? 37. Can you calculate sin 37 from here? Sin 37. 3 by 5. That means this has to be 37 degree ना बाबा? Hello. Yes, sir. What happened? Sin 37 triangle से कितना है? 3 by 3 by 5. 5. Can I say this 3/5? If I want the answer, this should be 37 degree ना? Hello. अब इधर Yes, डायग्राम sir. देखो सब लोग. जाना इधर से इधर है. उसको स्विम कैसे करना पड़ेगा? ऐसे 37 degrees from AB. ऐसे स्विम करना है. कितना डिग्री है ये? 37. Can I say रिवर तो ऐसे भाग रहा है.
Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Can I say with respect to the upstream direction, or sorry, with respect to the downstream direction, कितना डिग्री बना रहा है वो? 37 plus 90. 37 plus 90 ना बेटा? Hello. This angle. What will be the resultant answer? थीटा कितना बनाना चाहिए with respect to the upstream downstream direction? Net theta should be 37 plus कितना डिग्री? What will be the resultant answer? 120. Hello. ये देखो ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा? एट वन एंगल टू द River flow. रिवर फ्लो. तो ही वांट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? वी आर ना बेटा. थीटा शुड बी मेड विथ रिस्पेक्ट टू वी आर बार. हेलो. Yes, एम आई sir. करेक्ट? एम आई करेक्ट? Yes, sir. भाई सब एंगल ऑब्ट्यूस है तो आपको सोचना ही है ना 90 के ऊपर ही है ये. हम्म. Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आप लोग के लिए नहीं है, because that level of derivative you don't have right now. So neglect this question right now. Later on, if sometime it comes, ये generally NEET में नहीं पूछा जाएगा. And I cannot explain at this stage because your mathematics is very low level right now. You all have not done higher level of derivative. So I cannot explain this thing right now. आप थोड़ी देर patience रखो. If I want to do, I'll do it later. Right now, you don't attempt this thing. Okay? चलो ठीक है. Hello. Yes, sir. Question number 8 पर आता है. This is question number 13 of your. चलो हाँ, अभी ये बहुत easy है. 2 trains are there. Each are how much long? 50 meter long. So this is 150 meter long train. This is another 50 meter long train. इसका speed कितना है बेटा? 10 meter per second. और इसका speed कितना है? 12 meter per second. At what time will they pass each other? Very simple. Okay. Can I say time of passing will be, time is distance relative by speed relative? Hello. Yes, Yes, sir. sir. What Yes, is the sir. relative distance between them since they are there in opposite direction, and if they want to clear one another, how much will be the total distance to clear one another? 100. Some of them. 100. Some of them, na? Hello. Yes, sir. Clear one another मतलब क्या है? ये इधर से इधर आ जाए. ये अगर इधर से इधर आ गया तो इसको इसका 50 निकालना है और खुद का भी 50 निकालना है ना बाहर. हेलो. Yes, sir. So total distance should become what? 100. And what is the relative speed? Since they are in opposite direction, the relative speed will add, na? Yes, sir. 25. 12 है ना? 10 plus 12 है ना? That's 15. 20. So 15 is 15 है. Sorry, 15 है. ये 15 हो गया. तो ये कितना हो गया? 10 by 25. कितना seconds लगेगा? 4 seconds. 4 seconds. We have done this thing in the theory also, na? I think so. I don't know. Yes, sir. Hello? भाई दो trains है, when they are there in opposite direction to clear one another, the relative distance will add. Yes, sir. Formula actual क्या है formula? S1 plus S2 upon. Hello. Yes, sir. V1 Yes. plus V2, V1 plus V2, V1 plus V2. Getting it? Yes, Getting sir. it? Okay. Last question I'll attempt. A man is 25 meters behind the bus. मजा आएगा सब लोग इधर देखो. This is the bus. Man किधर है? 25 meters behind the bus. When the bus starts accelerating with how much? कितना? 2 meters per Meter. second square. And the man is moving with how much speed? 10 meters per 10 second. meter per second. Time taken to board the bus. Suppose he boards the bus here. बोलो. याद है इसके दो मेथड थे. Yes, sir. Okay. I will solve by relative method today. Which method I am solving by? Relative Relative method.
वो दूसरा वाला जो मेथड है वो आप लोग सॉल्व कर लेना. हेलो, यू नो ना? हेलो, आई एम सॉल्विंग बाय रिलेटिव मेथड. रिलेटिव मेथड में क्या करना पड़ेगा? एक को रोकना पड़ेगा. सो सपोज बस को हमने रोक दिया. बस को हमने क्या बोला? फ्रीज, स्टैच्यू, रेस्ट. तो इसकी जो भी चीज है वो उसको उल्टा करके किसको दे देना है? Man. मैन को. Man. कैन आई से इसका स्पीड फॉरवर्ड इज 10 मीटर पर सेकंड. इसका एक्सेलरेशन ऐसे है, जब ये उल्टा हो जाएगा तो इसके पास ये रिटार्डेशन की शक्ल में आ जाएगा. हेलो, हेलो. Yes, sir. And can I say how much is the distance to be covered? Because the bus has come to rest now. Getting it? Yes or no? सही है? अच्छा, which Yes, formula sir. will you apply? Final velocity man का कितना हो जाना चाहिए? 0. He is inside ना. Which formula will you apply in kinematical equation? Come on, fast man. B square Square is is U equal square plus to. 2A. U square plus 2A. Are you all understanding or not? भाई v कितना है? v तो 0 हो जाना है ना मैन को. जब वो बस को पकड़ लेगा तो रुक जाएगा ना. He not start running again. Hello. Yes, sir. What will be u? U is this 10. 10 square. 2a. How much is a? Minus 2. Minus 2. एक मिनट. I don't need. So this. it use I'm S is UT plus हाँ. Yes, we need time now. I'm very sorry. Okay. यार बाकी सब तो दिया था ना. ये सुनो, क्या यूज करना है? We require time ना बच्चा. हेलो. Yes, Yes, sir. sir. आपको टाइम चाहिए ना आपको तो. Which formula will I use? S is S UT S is plus equal half to AT UT square. plus half AT square. S कितना है? 25. A कितना है? Minus 2. कैंसिल. कैन आई से ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 10t माइनस t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इज इक्वल टू 0. चलो, क्वाड्रेटिक. यू आर एक्सपर्ट्स मैन. कम ऑन, टेल मी. T is So equal to it's T 5. minus 5 the whole square. What are the two options which we are getting? T minus 5. T minus 5, right? Is equal to 0. Getting it? Hello? Yes, sir. So can we use V is equal to U plus AT? But Then you also don't know we the can- you don't know the distance at that moment. No? Yeah, V is equal to U plus AT में आंसर आ जाएगा आपको. Yes, that also you will get ना. Yes, sir. Because finally that also you can use. Correct है. T will become Okay, 5 seconds. Correct है? Yes, you Yes, can sir. use V is U plus AT. That is much simpler. Hello? Yes, Because he sir. should stop when he catches the bus, na? That logic will also work. I hope you all have understood. Yes, sir. ठीक है? So ठीक है. This question you all do it for homework. ठीक है? So we have completed with our relative motion. Next time I'll be doing the mixed bags, the mixed miscellaneous questions, which you'll enjoy a lot because it'll be mixed of all the concepts now. ठीक है? चलो, thank you very much. Thank you, sir. thank you, sir. Thank you, sir.